that time. Doubts before I go ahead? Doubts, if any? Sir, I have a Ritvik. doubt. Okay, what? Let Ritvik say. He was saying something. So can we do exponents का revision कल? अच्छा, साइंस जिया आपका कब है चैप्टर? आज शायद साइंस खत्म कर दूंगा मैं. मे बी टुडे आई कंप्लीट. आई थिंक ये कंप्लीट कर दूंगा, फिर कल कर लेंगे. एक्सपोनेंट्स एंड पावर का रिवीजन कल कर लेंगे. श्रिका, तस्मिया, गुड इवनिंग. सर आई थिंक 14th को मेरा साइंस का एग्जाम है. तो अपने पास वैसे ही खत्म हो जाएगा, तू चिंता मत कर, हो जाएगा. और सर उसमें 3 चैप्टर है जो कि हमने अभी करे नहीं है ट्यूशन. बताओ कौन कौन से? फोर्स एंड प्रेशर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फोर. ठीक है, कल इनका एक्सपोनेंट पावर करा देता हूँ, उसके बाद आपको I'll take you. ओके. I'll take you with the science. Okay, chapter number 13. Okay, good evening Prabhun, Shrika, Tasmiya. Sound. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, Ritvik, that was the only point you had? Yes, sir. Okay, Arnav, doubt? Yes, sir. Sir, can anaerobic microorganisms survive in space? Yeah, viruses can survive in space. Okay, I'll give you one example. ये बड़ा कंफ्यूजन मचा रखा है वायरस का लोगों ने, कि वायरस नॉन लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉट डेड. मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ. ऐसा बोला जाता है कि वायरसेस दे आर नॉट लिविंग, but the moment they enter a body which can provide them energy for growth, they will start multiplying. But what happens in case of a seed? Let's say जो आप लोग वो खाते हैं ना, स्प्राउट्स खाते लोग, तो एक जो चना होता है स्प्राउट, ड्राई चना है वो, इज इट लिविंग और डेड? अर्नव, चना, ड्राई चना ना, सूखा हुआ चना जिसकी दाल बनती है, सब्जी बनती है, हाँ, डेड है लिविंग है? Living and non-living both. लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. बिकॉज जब तक वो डेड है उसको तुम स्पेस में ले जाओ, एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेज दो, कहीं ले, अनलेस इट इज बर्न्ड, इट्स नॉट बी बर्न्ड. ओके, तो जब तक वो बर्न नहीं हो रहा, सेफ है, तो वो नॉन लिविंग एंड डेड है. यू पुट इट इन अ क्लॉथ, damp cloth, it will start germinating. There is food inside every seed, and that food comes from where? When I teach you reproduction in plants, that time I'll teach you the ovary becomes the fruit, and inside the ovary is a seed which will then grow up into a new plant. So उसके चारों तरफ एक्चुअली जो मैंगो, जो एप्पल, जो दाल, जो राइस, जो वीट हम खा रहे हैं ना, वो हमारे लिए नहीं बना था, वो प्लांट ने अपने सीड को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया था, हम लोग खा जाते उसको. तो सिमिलरली जब चना है उसको आप स्प्राउट करोगे, गीला करोगे या मिट्टी के अंदर डाल दोगे, गीली मिट्टी में, धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा. और नाउ सिमिलरली वायरसेस आल्सो विल सर्वाइव इन स्पेस अनलेस they are exposed to very severe temperatures or radiation. If the radiation is there, radiation will kill them. Radiation kills living organisms because जो radioactive waves होती है, alpha, beta, gamma rays, they pass through the cells and tear the cells. इसीलिए जब कैंसर के अंदर लोगों के ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी, इसलिए उनको पेन इतना होता है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो अंदर जाती है, उनके सेल्स को क्लियर करती जाती है. हम लोग को भी जब सुई चुभती है, क्यों चोट लगती है, क्यों दर्द होता है? बिकॉज दैट नीडल हैज प्रिक्ड आवर सेल को उसने प्रिक कर दिया, और अब हमारी सेल चिल्ला रही है कि मेरे को दर्द हो रहा है. राइट गाइस, बिफोर आई गो हेड, सर खाली वायरसेस सर्वाइव कर सकते हैं, अनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया कर जाएगा, बैक्टीरिया कर जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया आल्सो सर्वाइव. But then again, I am not giving a general answer. I am giving a general answer in the sense, I am not giving a specific answer. हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ना करें, कुछ एल्गी शायद ना करें because of dryness, कुछ फंगाई ना करें, ऐसा हो सकता है. 5 तरह के होते हैं ना, 5 तरह के होते हैं. PV5 इसका जो कोड मैं छोटे पिछले क्लास सब लोगों को सिखाया था, PV5, परमवीर फैबुलस. P for protozoa, V for virus, F for fungi, A for algae, and V for virus. Okay.
सर मैंने अपना डेट शीट और सिलेबस भेज दिया है सुपर वाले ग्रुप में। ठीक है, मैं देखा था पिछली बार वैसे, बट मेरे को याद कराते रहना बेटा जी। ओके ओके, तो कल हम करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। लेकिन ऋत्विक किस लिए कर रहे हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर? टेस्ट है जनरल रिवीजन? सर मंडे को टेस्ट है। मंडे को टेस्ट, ठीक है, कल करा देता हूँ एक्सपोनेंट पावर। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, हम लोग कर चुके हैं, शायद से वीडियो तब तक नहीं बनने शुरू हुए थे, बट मैं करा दूंगा रिवीजन। आपकी क्लास में हो गया ये? जिन जिन से मैं पूछ रहा हूँ मुझे कंफर्म करना, जो लोग पुराने नए लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। ऋत्विक चंदेल, आपकी स्कूल में हुआ है एक्सपोनेंट पावर? नो सर। ओके, तस्मिया आपके यहाँ? यस सर, लेकिन मैं तब स्कूल में नहीं थी। ठीक है, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ध्यान से सुनना और वीडियो देखना फिर बाद में, क्योंकि इसमें रिवीजन है तो फास्ट जाऊंगा, बाद में वीडियो देख लेना। प्रभुगुण, व्हाट अबाउट यू? नो सर। Okay, so please watch the video. I'll cover everything, but I'll go slightly fast. Okay, so three things before we go ahead. I want to know whether you guys have understood or not. First is amplitude. What is the amplitude of a sound wave? Secondly, what is the frequency of a sound wave? And thirdly, what is the time period? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं एक बार के लिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? ओके, एम्पलीट्यूड, लार्जेस्ट और maximum distance from mean position. Distance from mean position. तो अगर कोई साउंड वेव ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, ऐसे करके ऐसे, तो ये है एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। generally क्या है, there's a rule that frequency f is equal to 1 upon t time period, or time period is equal to 1 upon f. एक और वेवलेंथ मुझे बतानी, पर देखता हूँ बनाने की जरूरत है कि नहीं है। अगर नहीं होगा सिलेबस में तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, आई विल शेयर द नोट्स। कहाँ तक हम पहुंच गए? ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड, नॉइज है, पिच, एम्पलीट्यूड। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल आता है छोटे छोटे, 1 मार्क और 2 मार्क का, f इज इक्वल टू 1 अपॉन t का। ध्यान रखना हमेशा, t इज ऑलवेज इन सेकंड्स, t इज ऑलवेज इन सेकंड्स। एंड फ्रीक्वेंसी की जो वो होती है ऐसा यूनिट, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को अदर वर्ड्स में बोल सकते हो वाइब्रेशंस पर सेकंड, अदर वर्ड्स में इट कैन बी रिमेंबर्ड एज वाइब्रेशंस पर सेकंड। चलो, ईयर वाला लास्ट में कवर करूंगा। लेट्स गेट ऑन विद थोड़ा सा इसको कवर करें, आज चैप्टर खत्म करने की प्लान करें। ओके, जस्ट अ सेकंड। क्लास 8 साइंस 13। Okay, just confirm to me anybody who has not read yesterday. Not read types. Yeah, guys, just type your name. Shrika, Arnav, Arsha. Okay, anybody else? Prabgun, ऋत्विक चंदेल। ठीक है दोस्तों, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे आज। उसमें अभी मुझे याद है काफी थोड़ा सा कम पढ़ा था। If I get it time, I'll give you a chance. Shrika, starting with you.
Yes, I'm sharing the notes. Right, guys. See, we have done this all this sound produced by vibrating body. ये सब क्रिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीज से साउंड आ रहा है, स्ट्रिंग से आ रहा है कि एयर कॉलम से आ रहा है. Sound produced by humans. I showed you that picture yesterday of the slit, two slits we have in our larynx. Sound needs a medium for propagation. That's why spaceship के बाहर या इवन स्पेसशिप के अंदर भी कोई वो एयर नहीं होती. नहीं, स्पेसशिप के अंदर होती है, प्रेशराइज होते हैं स्पेसशिप, लेकिन उसके बाहर ये लोग बात नहीं कर सकते आपस में. तो टेलीफोन की बात करी, ये मैं अभी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पूरा. एम्पलीट्यूड. ओके, यहां से पढ़ना शुरू करें. श्रीका, प्लीज रीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 22. Amplitude, time period, and frequency of Yeah. vibration. It will be oscillating or vibrating. Example: when a swing jhula moves back and forth repeatedly, then we say the swing is making vibration or oscillation. Since every vibration has three characteristics: amplitude, time period, and frequency. So, in the order to learn these from a support, here the metal ball is called the bob. अरे माता, श्रीका जी, थोड़ा आराम से पढ़े, लाइन छोड़ दी आपने बीच में, थोड़े ध्यान से आराम से पढ़े. सर Since मैंने every vibration, सर तस्मिया ने रीड किया था ये. सॉरी, श्रीका क्या कह रहे? सर तस्मिया ने रीड किया था कल. कोई बात नहीं, कर रहे, मैं मेरे को पता है, मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ. Since every vibration has three characteristics: amplitude, time period, and frequency. So, in order to learn these characteristics, consider a simple pendulum is made by tying about 1 meter long thread from a metal ball and suspended from a support. Here, the metal ball is called the bob, and if a small displacement is given to the bob, then it moves through the floor. When the bob is at A, then this position is called central position, and this position B is also called extreme position. The amplitude A of vibration is defined as the maximum displacement of a vibrating object from its central position. The amplitude actually tells us how much far the oscillating object is displayed from its central position. Here, AB and AC is the amplitude of pendulum. The time period T is the time taken by a vibrating oscillating object to complete one vibration. Example, the time taken by pendulum bob to travel from A to B, then B to C, and then back to A is the time period of pendulum. The SI unit of measuring time period is second. The frequency f is defined as the number of oscillations per second. Frequency is measured in hertz, Hz. So, when an object makes one vibration in 1 second, then its frequency is 1 Hz. If an object makes 20 oscillations in 1 second, then its frequency is 2 Hz, 20 Hz. Sir, your mic is mute. So, you are muted. Right. So guys, so it's a basic simple thing. 1 मिनट के अंदर कितने साइकिल पूरा कर रहा है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी. ओके, और इसके न्यूमेरिकल आ जाता है. एक न्यूमेरिकल दे दूं क्या? आई थिंक दैट विल बी वाइज. आई विल जस्ट गिव फाइंड वन न्यूमेरिकल एंड गिव इट टू यू. ये आता है एग्जाम के बाद. या ओके, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. Once it is done, please write D. थोड़ा इसके प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन आते हैं.
Okay, wait, and let me just get two, three more people. I'll open the question. Okay, जिसको नहीं आता आईडी के लिख दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओपन. आंसर प्लीज. जी ये टाइम पीरियड है कि फ्रीक्वेंसी? The frequency. टाइम पीरियड. Sir, time period. टाइप कर. All right, guys, pay attention, please. Given oscillations, number of oscillation is equal to, कितने oscillation है? Sia, how many oscillations? Sir, 40. Okay. Time needed for 40 oscillations कितना है? प्रभगुन. टाइम कितना दिया है प्रभगुन? 4 seconds. 4 seconds. Guys, normal unitary method है. हालांकि I can give you a formula but not required. Normal unitary method है. 40 oscillations is equal to 4 seconds. One oscillation is equal to 4 upon 40. क्या मैंने गुरु मत दिया हुआ है यूनिटरी मेथड में? टू गेट द वैल्यू ऑफ वन डिवाइड वन ऑसिलेशन कितना टाइम लेगा? 4 upon 40 is equal to 4 1 जा 4, तो 1 upon 10 seconds और 0.1 सेकेंड. तो वन ऑसिलेशन के टाइम को हम बोलते क्या है? Time frequency. या वंश नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते. वन ऑसिलेशन का Sir, टाइम. उसको time period बोलते हैं. यस, वन ऑसिलेशन के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड. वंश क्लियर? यस सर. टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसके पास. एंड अभी मैंने आपको बताया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी जस्ट राइट 1 अपॉन टी. 1 अपॉन टी कितना? 0.1. इस डेसिमल को हटा दो, यहां से यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 1 है, ये भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज. ऋत्विक तावरी ने लिखा है 10 ऑसिलेशन पर सेकंड. वो ठीक है, पर ऋत्विक अब से आपने हर्ट्ज लिखना है. तो बेसिकली हमें यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कितना था. अदरवाइज अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला देता हूं. T is equal to नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, उसको भी याद कर सकते हो आप लोग, अपॉन टाइम टेकन और टोटल टाइम. श्रीका गॉट इट? सर आपने उल्टा नहीं लिखा. सर हाँ. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइडेड बिल्कुल बाय बिल्कुल 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 सही है. सो टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. करेक्ट. इन दिस केस T is equal to टाइम टेकन कितना? 4 सेकेंड्स. ऑसिलेशन कितने? 40. 4 1 जा 4 4 टच 1 अपॉन 10 is equal to 0.1 सेकेंड. और जैसे ही आपके पास T आ गया you can find out the F. Okay, time taken upon number of oscillation. Okay guys, next question भी इसी तरह का है, मैं दे रहा हूं. सर आप म्यूटेड हो.
या वंश करो जल्दी। Sir, done. अर्नव डन, अक्षय डन, जिया डन। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। Sir, time बाकी लोग डालो यार। period unit क्या है sir? Seconds. टाइम पीरियड सेकंड। शिया का नहीं आया आंसर अभी। शिया, रबगुन, तस्मिया, यार डिले मत पड़ो यार तुम लोग। अभी तो फॉर्मूला भी दे दिया, फॉर्मूले में डालना, फॉर्मूले वैल्यू डाल दो। आंसर ऋत्विक टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड। ऋत्विक चंदेल, सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन, व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ वाइब्रेशन is equal to 500 and time is equal to 1 second. So time period T is equal to time taken upon number of vibration. This will be 1 upon 500. Okay, जब आप 1 upon 500 अपने को करना है, अब किसी भी तरीके से कर लो, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 upon 1000 और 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने। किसको नहीं आया बताओ? अभी क्लियर है? Yes, sir. Okay, just one last question, guys. सर आप म्यूट हो। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। बाकी लोग यार जल्दी करो। Sir, frequency की SI unit hertz है ना? या प्रभुन नहीं हो रहे क्वेश्चन। पोस्ट okay guys, 40 hertz is the right answer. See, So I forgot to put 0. so question number 3 given T is equal to 0.025 seconds, right? Okay, so F is equal to 1 upon T is equal to 1.025। 3 डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करने के लिए
यहाँ 3 0 लगानी पड़ेगी, या फिर डेसिमल को बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट हो जाएगा। 25 4 जा 100, 1 0 इज देयर, 40 हर्ट्ज। बहुत फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन में, ये वाला न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ साउंड? Next question is, how do we recognize sound? एक्चुअली हम अपने मदर की, फादर की, ब्रदर की साउंड पहचान जाते हैं, अजनबी लोगों की नहीं पहचान पाते, कि हम वी आर नॉट यूज्ड टू इट। 3 things, 3 factors. Firstly, loudness of the sound. Loudness of sound is directly proportional to the amplitude square. जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही बढ़ के साउंड की लाउडनेस आएगी आपको। सेकेंड इज पिच। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी पिच आएगी, उसकी पिच आवाज आएगी, श्रिलनेस भी बोल सकते हैं। या कम होता है, जैसे कल आपने वो क्या था, somebody mentioned grave, मेरे को बाद में याद आया, इंग्लिश में लैंग्वेज में भी होता है, he said in a grave voice, he said in a grave voice, मतलब थोड़ा सा फ्लैटिश वॉइस, नॉट एक्साइटेड, shrillness. And third is quality. तो क्वालिटी इज रिचनेस। और व्हाट इज रिचनेस? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। रिचनेस कहां से आती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ different frequency sounds, different frequencies combined together. This is quality, loudness, pitch and quality. So what happens is when we are speaking ना, फ्रीक्वेंसी तो हमारे यहाँ से क्रिएट हो रही है, मेन फ्रीक्वेंसी, बट उसके अंदर चेंजेस आते हैं। कहाँ से? यहाँ से आएंगे, फेरिंग्स से आएंगे, हमारा जो पैलेट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट ऊपर का, हमारे टीथ और हमारे नोज, ये सब कॉम्बिनेशन में उसको एक क्वालिटी पैदा करेंगे उसके अंदर। ओके, या मेरे को पढ़ने के लिए किसको मैंने बोला था? अभी तक सिर्फ श्रिका ने पढ़ा है, अर्नव आपने नहीं पढ़ा। अर्नव आप पढ़े अभी, characteristics of a sound. Sharing. Yeah, go ahead. Characteristics of a sound. Characteristics of sound. There are 3 characteristics of sound by which it can be recognized. These are loudness, pitch, and quality. 2 musical sounds can be different from one another in one or more of these properties. Loudness. Since loudness of sound depends on the amplitude of vibrations of vibrating body, let us consider a situation when a sitar string is plucked lightly. Then it vibrates with small amplitude and produces a faint of sound. On the other hand, when the sitar string is plucked hard, then it starts vibrating with a large amplitude and produces a sound. Now let us perform an activity to demonstrate the dependence of loudness of sound on the amplitude of vibrations of sound. उसको पढ़ दे यार, I think this is worth it. Yeah. Place a metallic tumbler and a tablespoon on the horizontal surface. Also, tie a small thermocol ball to a string and suspend it in such a way that it touches the rim of tumbler. First of all, strike the tumbler gently with a spoon. Try to hear a feeble sound and at the same time the suspended thermocol ball is pushed away to a small distance by vibrating tumbler.
So when the amplitude of vibration of tumbler is small, the sound produced is feeble. Now strike the फीबल tumbler. मतलब कमजोर, वीक. Now strike the tumbler at the rim with the spoon. Try to hear a very loud sound and at the same time, the suspended thermocol ball is pushed away to a large distance by the vibration of tumbler. So when the amplitude of vibration of tumbler is large, the sound produced is very large. ओके, इन अदर वेज आई कैन जस्ट से कि तबले के ऊपर जितनी जोर से हाथ मारूंगा उतनी जोर साउंड आएगी. घंटी, जो स्कूल की घंटी बजेगी या मंदिर की घंटी बजेगी, जितनी जोर से घंटा मारेंगे उतनी जोर से वाइब्रेशन उसमें ज्यादा होगा. जितना वाइब्रेशन होगा उतना ही एम्पलीट्यूड, यानी मीन पोजीशन से वो उतना दूर जाएगा, उतना ज्यादा वाइब्रेशन दूर जाएगा और उतनी लाउडनेस होगी. ओके, नाउ कंटिन्यू प्लीज. ओके, एक चीज है, what is the measure or unit of loudness? It is called decibel. One more thing about decibel is not a linear. मतलब ऐसा नहीं कि 30 डेसिबल की जो साउंड होगी वो 60 डेसिबल की साउंड से हाफ होगी, ऐसा नहीं है. ये जो स्केल है एक्सपोनेंशियल है, यानी जैसे अर्थक्वेक का होता है, जैसे वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मीटर होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल. यानी कि 3 डिग्री का जो क्या बोलते हैं उसको स्केल होता है जिससे मेजर करते हैं लोग, सेस्मोग्राफ पे जो रीडिंग आती है अर्थक्वेक की, अगर 3.5 है और 7 है, ऐसा नहीं कि 7 से डबल है. 7 और 3.5 में बहुत ज्यादा रिलेशन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है वो पावर उसकी बहुत ज्यादा. ऐसे डेसिबल के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि 30 डेसिबल की साउंड और 60 डेसिबल की साउंड बस डबल का फर्क है, नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन एक्सपोनेंशियल. या, so decibel is the word. Please go ahead. Yes, sir. From the above activity, we can conclude that the loudness of sound depends on the amplitude of vibration of sound producing object. So it is a fact that loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. Example, if the amplitude becomes twice, then the loudness increases by a factor of 4. The loudness is expressed in a unit called decibel. The table gives some idea of the loudness of sound coming from the various sources. Note, above 80 decibel, the noise becomes physically painful. एक्चुअली क्या होता है, ये इसको पढ़ देना एक बार, जो साइड में लिखा हो साउंड कितना डेसिबल. ये लिखा हो साइड में. हाँ, अरे कहाँ गए अर्नव? Yes, sir, पॉइंट नंबर actually 32. हाँ, मैं म्यूट था और बोल रहा था. सर पॉइंट नंबर 32 पढ़ना है. या हाँ. Sound, normal breathing, sound and loudness. Normal breathing, 10 decibel. Soft whisper at 5 meter, 30 decibel. Normal conversation, 60 decibel. Busy traffic, 70 decibel. And average factory, 80 decibel. एक्चुअली 10 का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है साउंड के अंदर. तो जो 10 डेसिबल और 20 डेसिबल है वो 10 टाइम्स है. ऐसी 20 डेसिबल को 10 टाइम्स करेंगे तो 30 डेसिबल, 10 टाइम्स का इनका रिलेशन होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल 0 डेसिबल है कोई, बिल्कुल साउंड नहीं आ रही, उससे 10 टाइम्स साउंड विल बी 10 डेसिबल, और 10 डेसिबल की साउंड का 10 टाइम्स विल बी 20 डेसिबल. 20 डेसिबल की साउंड का, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉफ्ट विस्पर एक आ रहा है, 30 डेसिबल है. नाउ नॉर्मल कन्वर्सेशन और इसके बीच में जो रिलेशन है वो 1000 टाइम्स मोर है, और बिजी ट्रैफिक इज नाउ 10 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल कन्वर्सेशन. फैक्ट्री का जो है 10 टाइम्स मोर देन 70 डेसिबल. दैट इज रिलेशनशिप. कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट यू शुड नो इट इज एक्सपोनेंशियल. चाइना के जो लोग हैं, चाइना की जो आर्मी है, चाइना के अंदर लोगों को टॉर्चर करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ उनको बैठा देते हैं और लाउड साउंड में उनको सुनाया जाता है, हाथ पर बांध देते हैं उनकी. तो बंदे को इतना टॉर्चर होता है, इतना पेन होता है चाइनीज टॉर्चर में, वो बोलता है जो कुछ पूछना पूछ लो, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ. नेक्स्ट. ओके, अर्नव के बाद किसका चांस था पढ़ने का? गाइस एक मिनट जरा मेरे को देखना, या जिसका भी है बताओ भाई. आगे अर्षा, प्लीज गो अहेड. मेरा. Yes, sir.
Pitch, the characteristic property of sound by which we can differentiate between different sounds of same loudness, is known as pitch of sound. We can distinguish man's voice from a woman's voice on the basis of their pitch or shrillness. So the pitch of sound depends on the frequency of vibration of sound producing object. When the frequency of vibration is higher, then we can say that the sound is shrill and has the higher pitch, and if the frequency of vibration is lower, then we can say that the sound has lower pitch. Example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and so it produces a sound of higher pitch. A bird makes a higher pitched sound whereas a lion makes a lower pitched roar. Even when the roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. Most of the time the voice of woman has higher frequency and is shriller than that of man. ओके guys, I think बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया है इन्होंने to understand the difference between loudness and pitch. See, very good example has been given. Lion when it roars like oh करके, ठीक है, उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है. I don't know कितने लोग तुम में से एक्चुअल लायन का रोर सुना है. मैंने सुना हुआ है, इतनी तेज आता है और जब पूरी तरह से रोर करता है कि आपकी बॉडी का एक एक बाल खड़ा हो जाता है. जू में सुना था मैंने, इतनी जोर से आवाज आती है उसकी, बट उसकी पिच कम होती है. पिच किसकी ज्यादा है? बर्ड की आवाज की, या मॉस्किटो जिस बार कान के बाद जन 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 कर रहा है, उसकी पिच ज्यादा है. So that is the difference between loudness and pitch. Now we'll see quality. अर्षा कंटिन्यू करें, मैं शेयर कर रहा हूँ. Yeah. Quality. Quality. The characteristic property of sound which enables us to differentiate between the sound produced by different sound producing objects, even if they are of same loudness and pitch, is known as quality of sound. Thus, the sound produced by different singers can be distinguished by their quality. Okay. Now let us see what are the sound range that humans can hear. Some other animals can hear more than us. For example, bats can hear more than us. Horse can hear. Dogs can hear a wider range as compared to us. So your screen is presenting. Okay. Thank you. What is our range? So 20 hertz to 20,000 hertz. Yeah, human range of hearing. See, human range of hearing is 20 vibrations per second to 20,000 vibrations per second. यहाँ मैंने जानबूझ के वाइब्रेशन पर सेकंड लिखा है ताकि तुम लोग थोड़ा रिलेट कर पाओ. Otherwise, I should have written it hertz. More than that we can't hear. Less than that we can't hear. Okay. तस्वीर हर्षा के बाद प्रभुगुण आप पढ़े अभी. आई एम प्रेजेंटिंग. Go ahead, Prabhu. Inaudible and audible. Audible and inaudible sound. As we know that if an object vibrates, then sound is produced. But the sound produced by vibrating simple pendulum is not heard by us. This is because the frequency. Heard. This is because the frequency of vibration of simple pendulum is very low, about 2 to 3 hertz. All the vibrating bodies do not produce audible sound. It is due to the fact that sound of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 hertz, cannot be detected by a human ear. Such type of sounds are called inaudible. On the other hand, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, 20 kh किलोहर्ट्ज, उसी को 1000 को किलोहर्ट्ज कर दिया.
Kilohertz are also not audible to human ear. So for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. The sound of frequency which is lesser than 20 hertz are called infrasonic sounds or just infrasonics. The sound of frequencies greater than 20,000 hertz are called ultrasounds or simple ultrasonics. ओके, एक मिनट होल्ड करना, मैं थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिक दे दूं, यहाँ पर ट्रिक को खास है नहीं। इंफ्रा का मतलब इंफीरियर होता है, कम, तो 20 हर्ट्ज से कम वाली इंफ्रा है, और अल्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा है, अल्ट्रासोनिक इज बियॉन्ड 20,000, इतना सा। ओके, तो अब कंटिन्यू करें आप, या शेयर्ड, गो अहेड। देयरफॉर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। There are some animals which can produce ultrasonic sounds as well as hear ultrasonic sounds, as bat is an animal which screams at a very high frequency, i.e. much beyond the limit of our hearing, 20,000 hertz. Therefore, bats produce as well as hear ultrasonic sounds. Dogs can also hear ultrasonic sounds. Even the police use higher frequency whistles which dogs can hear about which बट ह्यूमंस dogs के can नॉट। hear but humans cannot. So the ultrasound equipment which is familiar to us for investigating and tracking many medical problems work at frequencies higher than 20 kilohertz. हाँ, तो बहुत बार ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड तो वो जो आप डॉक्टर के हाथ में होता है, वो उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, साउंड अंदर जाती है, और अंदर जाके फिर वापस कैच की जाती है, बेस्ड ऑन दैट द फिल्म इज मेड बाय कंप्यूटर्स। ओके, ऋत्विक चंदेल, जस्ट ओके गाइस, जस्ट खत्म होने वाला है। दो तीन चीजें, नॉइज और म्यूजिक के अंदर कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट नॉइज इज अनप्लेजेंट, म्यूजिक इज प्लेजेंट। हाँ जी, पढ़ें ऋत्विक चंदेल। सर लेकिन म्यूजिक में तो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, और नॉइस में नॉन पीरियोडिक और इरेगुलर वाइब्रेशन। That's why it is pleasant, because it has a melody or rhythm. ओके। पढ़ भाई, पढ़ भाई, पढ़ भाई, ऋत्विक चंदेल। ऋत्विक, टाइम नहीं अपने पास, ये है भी क्लास में कि नहीं है? ओके, अभिनव, अभिनव आप पढ़ें जल्दी, अभिनव, अभिनव। Yes, sir. हाँ पढ़, Sir, नॉइज noise देन and म्यूजिक, म्यूजिक। in our surrounding, we hear different types of sounds. Some of these sounds are very much pleasant to hear, whereas other sounds are unpleasant to hear. The unpleasant sounds are called noise. So, due to irregular vibrations of the sound producing source, the noise is created. Example, running of mixture of and grinder in the kitchen produce noise. Also, the horns of the buses and the trucks produce noise. Even from the various uh, noise construction sites, large amount of production of noise can be experienced. कंटिन्यू पढ़ते रहना आप। हाँ, So the sounds which are pleasant to hear are called musical sounds, which are produced by regular vibrations producing source. Example, the sound produced by harmonium as musical sound. The string of the sitar produces a musical sound even when a person sings a melodious song. He also produces musical sound. If a ओके, musical sound becomes too loud, then it would not remain melodious and hence becomes noise. This is usually when happens when very loud music is played at a disco and a band plays loudly in a party. ओके, कंटिन्यू प्लीज। Noise pollution. Noise pollution 44. The presence of excessive and unwanted sounds in the environment is called noise pollution. The sounds of the vehicle's explosion, including bursting of crackers, noise,
Machines, loudspeakers, etc., are the major causes of noise pollution. The major sources of noise pollution in homes are television and transmitter radio at high volumes, some of kitchen appliances, use of desert cooler and air conditioners. Harms of ओके noise कंटिन्यू, हाँ pollution. कंटिन्यू, क्योंकि इसमें कुछ Harms of बताने वाला नहीं है, तो आप लोग बस पढ़ लो इसको, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब इसमें एक्सप्लेन वाला कुछ What है नहीं, can I तो read? एक्सप्लेन या हाँ जी, somebody saying something? अच्छा अच्छा, ऋत्विक चंदेल, I'll give you a chance, don't worry, I'll make you read something else, don't worry. Sir, it was Let Tasmia. या that was तस्मिया, तस्मिया वेट कर अभी, ओके तस्मिया वेट कर बच्चे अभी, हाँ जी कंटिन्यू स्क्रीन प्लीज। शेयर हो रही है। कोई बात नहीं, खत्म हो गया क्या? मेजर टू लिमिट नॉइज। No, sir. No अभिनव सर, अभी ऊपर ही है अभिनव पढ़ दे भाई जल्दी, अभिनव। सर, इससे भी ऊपर है 40। Sir, इससे ऊपर. मेरा थोड़ा टाइम कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, हाँ या harms of noise pollution. Since the presence of excessive noise in the surrounding can cause many health-related problems, also lack of sleep, hypertension, high body pressure, anxiety, irritation, and headache, and many more health disorders may caused by health disorders. A person who is exposed to a loud sound continuously may get a temporary or even permanent impairment of hearing. इम्पेयर मतलब खराब होना, या ओके हाँ जी Measures आगे। of limit noise pollution. In order to control, we must control the sources of noise. 1. The aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, and home implements must be installed by silencing devices. 2. The industries which produce noise should be set up away from residential areas. 3. There should be a minimization of use of automobile horns. 4. The music system and the television should be run at low volumes. 5. In order to cut down the sounds reaching the residents, the plantation of trees must be along the buildings and roads. रोड्स के बीच में भी आपने देखा जो डिवाइडर होता है उस पर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ताकि वो जो अपने व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले, और बिल्डिंग के जो सोसाइटी उसके चारों तरफ ट्री लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक की जो नॉइज है वो एब्जॉर्ब हो जाए, लोगों के घर तक ना जाए। ओके दोस्तों, अब मैं फाइनली फटाफट आपको एक फंक्शनिंग ऑफ ईयर के बारे में बता देता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पे एक बंदे ने किसी ने ड्रम के ऊपर ढक करके मारा, तो ड्रम का वाइब्रेशन हुआ, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ एयर उसके कांटेक्ट में है, तो कुछ एयर ऐसे चलेगी, उसके पीछे वाली फिर दूर चली जाएगी, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ऐसी साउंड आती आती आपके कान तक आएगी। कंप्रेस्ड रेयरफैक्ट, कंप्रेस्ड रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, कंप्रेस्ड चली आ रही है। अच्छा, ये जो आपका कान जो बाहर का आउटर ईयर है उसको बोलते हैं पिना। पिना का काम है कि मैक्सिमम साउंड को कवर करके अंदर घुसाना, मैक्सिमम साउंड। अच्छा, साउंड जाती है, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, ये पार्ट है, इस कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, एंड इट इज पार्ट ऑफ आउटर ईयर। आउटर ईयर यहां तक है, ईयर ड्रम तक। नाउ दिस इज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम की इस तरह की शेप होती है, और ये वन पार्ट इज आउटसाइड एंड सेकंड पार्ट इज इन द मिडिल। ये जो एयर ड्रम है ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंडली, इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव टू साउंड। सेकेंडली, जैसा ही यहाँ पर ड्रम बजाने वाले ने अपना ड्रम बजाया ना, ऐसा वाइब्रेशन इसके अंदर भी ऐसे वाइब्रेशन होता है। ओके, ये सेपरेट कर रहा है, सेपरेशन है बीच में दोनों की। ये सेपरेशन होने के बाद यहाँ पे देर आर 3 बोन्स, एंड नाउ वी आर एंटरिंग मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर देर आर 3 बोन्स, 1, 2 and 3।
Now these bones are called ossicles. Their names are malleus, inverse, inquus, and third is called stapes, S-T-A-P-E-S. सर बट लेकिन ये इनके हमारी बुक में हैमर एंड स्टेरर दिया है। हाँ, इनके साइंटिफिक नेम है, लेकिन इनको जनरल भाषा में बोला जाता है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। मैं बता देता हूँ एनविल हैमर। हैमर तो सबको पता है, इतना मोटा हैमर, थोर वाला जो हैमर होता है, ये थोर का हैमर। और एनविल क्या होता है? जनरली आयरन स्मिथ लोग होते हैं, आयरन की कोई काम करना होता है, इनका ऐसे पास एनविल होती है, कुछ भी रखना इसके ऊपर रख के मारते हैं हैमर से। एंड थर्ड स्टिरअप, जिन लोगों ने राइडिंग की उन्होंने देखा होगा, राइडिंग करते के लिए एक हॉर्स के दोनों तरफ ये पड़े रहते हैं, इसमें बंदा अपना पैर डालता है, जिसको स्टिरअप। इनका फंक्शन क्या है कि यहां से जो कंप्रेशन आया उसको उन्होंने ट्रांसफर करना है कोहलिया तक। कोक्लिया इज राइट प्रोनाउंसिएशन। कोकलिया, कोकलिया, ये राइट प्रोनाउंसिएशन, कोक्लिया तक। कोक्लिया इज फिल्ड विद लिक्विड, रेड पेन। यहां ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिलिम्फ। ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं, पेरिलिम्फ। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो यहां से जो प्रेशर आया उसको इन तीनों बोन्स ने मिलके ये बोन वाइब्रेट करती है। तो होता क्या है, इनका मूवमेंट ऐसा होता है, जैसे साउंड आती रहती है ना, इनका मूवमेंट ऐसे करके मूवमेंट होता है ऐसे, तीनों का, तीनों अलग अलग है, जॉइंट है। और आप देखना यहाँ पे जो है साइज बड़ा है, यहाँ थोड़ा और छोटा हुआ, और यहाँ आते आते बिल्कुल छोटा साइज होता है स्टिरअप पे आते आते। तो क्या होता है कि एज एरिया रिड्यूसेस, एरिया कम होते जा रहा है, एरिया कम होता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। सबको पता है कि अगर मैं ऐसी स्टिक ले लूं जिसका ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा है, नीचे का कम है, उसको प्रेशर मारूं तो सबसे ज्यादा प्रेशर टिप पे होगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे कम। ये प्रेशर क्यों चाहिए अपने को? क्योंकि अब हमें लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन पैदा करना है। लिक्विड वाइब्रेशन क्यों जरूरी है? इस लिक्विड के वाइब्रेशन से ही यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स, कोक्लिया के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक इंपल्स बोल दो या करंट बोल दो। जैसे कि एयर के अंदर हाथ हिलाना आसान है, वाटर के अंदर हाथ हिलाना मुश्किल है, मेहनत लगती है। इसीलिए लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन डालने के लिए पूरा मैकेनिज्म है, यहां से बड़ा से छोटा 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 होते होते यहाँ आ गया, ताकि वाइब्रेशन हो जाए, सफिशिएंट वाइब्रेशन हो जाए। जनरली इट इज 20 टाइम्स more vibration is created by these three. So now vibration created, there are cells in cochlea which scientists have not still understood the mystery of this completely. It creates electric impulse which with the help of auditory, So what they create? electric impulse, electric current, which will go to the brain, and brain will decode this sound. Once again, pinna will receive the maximum vibration of the sound. It will channelize it into auditory canal, which will hit the eardrum, which is just like any other drum, and it will vibrate. That vibration will create a movement here in these three bones. These three bones will vibrate and carry the vibration into the inner ear. Inner ear is filled with a liquid called perilymph. Perilymph के अंदर it will create the same kind of compression and rarefaction. Same kind of compression, rarefaction will be created, which will be transferred to the cells. These cells will create an electric impulse based on this, and that auditory nerve will take it to the brain. And in the brain, it will be decoded. So it's a very complex process, but generally this is the process. Okay. सर इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स होगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स, नर्व इंपल्स नाम की कोई चीज नहीं होती, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस। ओके सर। ऋत्विक चंदेल, फटाफट थोड़ा उनको मैसेज कर देता हूँ अगली क्लास को, दे विल वेट। ये पढ़ दें आप जल्दी से। ऋत्विक चंदेल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Please read. We hear sound through our ears. Yeah.
सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो सर स्क्रीन शेयर Okay, 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 okay. Yeah, Ritik, go ahead now. ये पूरा डिटेल में है आपकी क्लास 9th के अंदर, so that's why just वीडियो देख लेना, you will understand. I have explained it. Yes. Okay, go ahead, Ritik Chandel. We hear sound through our ears. The sense organs which help us in hearing sound are known as ears. A very simple diagram of human ear is shown in the figure given alongside. Since the shape of outer part of ear is unlike funnel, so when the sound enters in it, then it travels down a canal called ear canal. At the end of the ear canal, there is a thin elastic and circular membrane called eardrum, which is stretched tightly. Yeah. Sound vibrations make the eardrum vibrate, and the vibrating eardrum cause a small bone hammer in the middle part. In the middle ear. Yeah. In the middle ear to vibrate, which passes to the stirrup via anvil. हाँ, बेसिकली क्या आता है, हैमर ने एनविल को मारा, हैमर ने वो थोर वाला हैमर है, उसने एनविल पे मारा, एनविल ने आगे पास कर दिया स्टिरअप को. ओके. So this vibrating stirrup strikes on the membrane of the inner ear made of liquid called कॉकलिया. कॉकलिया तो लिक्विड का नाम नहीं है, कॉकलिया तो जो स्नेल की तरह का एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं स्नेल. इसमें गलत लिखा हुआ इन्होंने, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉकलिया, इसके अंदर लिक्विड होता है पेरिलिम, इसको हिट कर रहा है स्टिरअप और फिर यहाँ पास ऑन हो रहा है. ओके, कंटिन्यू. the vibrating liquid cochlea set up an electric impulse to the auditory nerve, which goes to brain, and we get the sensation of hearing. Now let us perform. काफी अच्छा. बाय द वे पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो बोन्स है ना, द स्मॉलेस्ट, द टाइनीएस्ट बोन्स आर दीज थ्री: malleus, incus and stapes, hammer and will stirrup. Okay guys, any doubts? बताओ. ऋत्विक चंदेल, अर्शिया, जिया. नो सर, नो डाउट. शिव चौधरी. शिव. Yes, sir. Shiv, any doubts? Arnav, Prabgun? No doubt, sir. No, sir. Ritvik? No doubt, sir. Tia? No doubt, sir. Okay. Tasmiya? Vansh? Yes, sir. No doubt, I have sir. a doubt. No doubts? Yeah. Tasmiya बोल. Yes, sir. जब हम माइक में बोलते हैं हमारी आवाज लाउड आती है, कैसे? There is electronic amplification of that. तो क्या करता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारी साउंड आ रही है, जैसे कि हमारे ईयर ने किया है, हमारे ईयर ने 20 टाइम बढ़ा दिया ना, ऐसे ही वो मल्टीप्लाई करता है. और कभी भी तुम देखना, जो लाउड स्पीकर कार के अंदर, कभी देखना लाउड स्पीकर होते हैं कार के अंदर, वो वाइब्रेट करते, ठक 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 ऊपर नीचे जाते, देखा तुम लोगों ने? दे जस्ट वाइब्रेट लाइक ड्रम्स. So that sound comes from there. So that's why what happens is when our speech goes inside with the help of electromagnets. इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मैग्नेट भी होती है. हमेशा देखना, कोई भी जनरली तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा स्पीकर इसके अंदर मैग्नेट ना हो, जनरली मैग्नेट होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, पावर, उसकी पावर को बढ़ा देता है. तस्मिया? Yes, sir. चलो. ओके गाइस, वी फिनिश दिस चैप्टर टुडे. आई थिंक देयर इज नथिंग. कुछ होगा तो कल पूछ लेना मेरे से, एंड देन टुमारो लेट डू एक्सपोनेंट पावर रिवीजन, एंड देन वी विल टेक ऑन फर्दर साइंस चैप्टर्स. ओके, चलो. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.